Dear friends, this is a very important message which I am going to forward to you now. There is a 2023 census, population census that is going on in our country. तो इसके बारे में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर एक हिंदू जो भी हो वो अपने भाषाओं के ज्ञान के विषय में आपकी मातृभाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा आती है आपको, तो आप ये जानिए कि आप हर एक आपकी प्रार्थना के जो भी श्लोक है वो संस्कृत में होते हैं और अधिकांश हिंदू लोग जो है कि संस्कृत भाषा में ही प्रार्थना के श्लोक बोलने के यानी कि यूज्ड होते हैं। तो आपको संस्कृत आता है ये मानिए, और इसीलिए कहना ज़रूरी है कि आप जो सर्वे करने आएंगे पॉपुलेशन सेंसस का, तो उन्हें आपको संस्कृत भाषा आती है ये बात ज़रूर नोट करवाइए, बताइए और ऐड करवाइए आपके सेंसस के फॉर्म में। तो क्यों ये कि भारतीय जनगणना अपने अंतिम चरण में है। जनगणना अधिकारी डेटा इकट्ठा करने जल्दी ही आपके घर आएंगे। तब आपकी मातृभाषा हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयाली आदि जो भी हो उसे ध्यान में लिए बगैर आप मातृभाषा के अतिरिक्त और कितनी भाषा जानते हैं पूछने पर इस बार आप सनातनी हिंदू होने के नाते कृपा करके संस्कृत जानते हो बताना न भूलें। आपकी जानने वाली भाषाओं में से एक संस्कृत अवश्य लिखाए। भले ही आप संस्कृत भाषा प्रैक्टिस में रोज ना बोलते हो। इसके पीछे का ये जो आर्गुमेंट है ये है कि हम हर दिन अपनी प्रार्थना, मंत्र के उच्चार, श्लोक, संपूर्ण धार्मिक विधियां निश्चित रूप से संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं। इस तरह देवों की भाषा संस्कृत का शुभ अशुभ कार्यों में हम उपयोग करते ही हैं। तो इस बार आप संस्कृत भाषा भी जानते हो ये जनगणना सेंसस करने वाले अधिकारी के फॉर्म में अवश्य लिखाएं। देखिए, ऐसा करना भूल ना जाना, कारण कि आखिरी जो पिछली जनगणना सेंसस के हिसाब से संस्कृत बोलने वालों की संख्या समग्र भारत में केवल 2000 ही बताई गई थी। उसके विपरीत अरबी और फारसी बोलने वालों की संख्या इससे अनेक अनेक गुना अधिक थी, ज्यादा थी। इस तरह उनको भाषा के विकास हेतु फंड दिया जाता है। अगर इस बार संस्कृत बोलने जानने वालों की संख्या कम हुई तो संस्कृत भाषा को लुप्त भाषाओं की सूची में जोड़ दिया जाएगा। ऐसी संभावना प्रबल हो गई है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। संस्कृत तो भारतवर्ष की सबसे प्राचीन, सुंदर, दिव्य भाषा है। इस दैवीय भाषा संस्कृत को जीवित रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी इस बार हम सब की है। अगर संस्कृत को हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण जनगणना अधिकारी ने लुप्त भाषा में गिन लिया तो इस संस्कृत भाषा के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए सरकार की तरफ से निश्चित रूप से कोई फंड नहीं मिलेगा और फिर हम संस्कृत को हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए इस बार सेंसस फॉर्म में सतर्क रहकर, अवेयर रहकर संस्कृत का नाम जरूर जोड़ें। आपके इन्वॉल्वमेंट से और प्रयासों के कारण ही संस्कृत को जीवित रखा जा सकता है। ये हमेशा सबको पता है कि हम सनातनियों ने
स्वयं अपना नुकसान कर लिया है, पर इस नुकसान को फायदे में जरूर बदला जा सकता है। अभी देर नहीं हुई, कृपा करके जितना हो सके उतना आपके सभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लव्ड वंस, जो भी बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हो और चेन हो आपके जो आपके नेटवर्क में, तो कितने बने उतने अनेक व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात को अवश्य शेयर करें। और जो कि लुप्त होने की, यानी कि खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है हमारी अपनी संस्कृत भाषा को बचा ले। ये एक नम्र निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है। डियर फ्रेंड्स, Sanskrit is the mother of over 6,909 languages in the world, and it would be irrational to ignore the language. The current language census is said to be in the process of completion. Will it finding reflect a reality? Regrettably, it did not in the past. And in the process, Sanskrit, India's oldest language, considered to be the mother of all languages in the country, has been a great casualty. Almost all Hindus, the largest community in the country, know Sanskrit. They use most of the words in Hindi and other languages including Tamil, Malayali, Bengali, Maithili, that are derived from Sanskrit. During their worships and various rituals, the Hindus chant slokas and prayers in Sanskrit. Yet, according to 2011 Census report, only 24,821 people speak Sanskrit in India. Knowledgeable sources say such a census hardly reflects real status of Sanskrit in the country. The poor number of Sanskrit-knowing people is sure to affect the growth of the language in the country. The government allocates funds for the development of various languages in proportion to the percentage of people speaking them. The language census, hence, needs to be conducted very objectively and scientifically, or else the government would be allocating highly inadequate fund for the growth of Sanskrit language. This is in turn would affect the continuing publication of India's age-old literary works such as Vedas, Puranas, Upanishads, the Ramayana, the Mahabharata, Arthashastra, Arya Bhattyam, Panchatantra, Hitopadesh, Panani Vyakaran, and Yoga Sutra, which are all originally in Sanskrit. It would be irrational to ignore Sanskrit. Sanskrit is the mother of over 6,909 languages in the world. It is the richest language in the world. At present, the Sanskrit dictionary has 102.78 billion words. It is highly scientific language. Sanskrit is written the way it is spoken. This language is very useful in speech therapy. Speaking Sanskrit involves experimenting with all muscles of the tongue. Conversation in Sanskrit creates positive energy. Sanskrit texts are available for valuable research and knowledge in numerous sciences including astronomy, aeronautics, dietetics, architecture, chemistry, and pharmacology. According to NASA, Sanskrit is the most useful language for computers, the 6th and 7th generation. Supercomputers are likely to be based on this language only. The people the world over have come to increasingly realize the importance of Sanskrit. In Germany today, a great deal of research is being done on Sanskrit. The language is being studied in 18 of its universities. It is compulsorily taught at St. James School in London. India must take a lead in promoting Sanskrit. She ought to lay special focus on Sanskrit today. At present, various divisive forces are at work in the country. Sanskrit is a language that can unite the whole country.
All Indians must be learning Sanskrit and openly embrace it as their language. So, Veer Damodar Savarkar rightly says Sanskrit language is our sacred and glorious heritage. Sanskrit is the brainchild of our lineage. India's first president, Rajendra Prasad, said, "Our culture, literature, and life are incomplete as long as our scholars, thinkers, and educators are ignorant of Sanskrit." Mahatma Gandhi said, "No one can become an Indian and scholar without knowing Sanskrit language." So hence, my dear friends, kindly include in your form Sanskrit as the language which you know. Thank you very much for listening to this podcast, and kindly forward this message as much as possible to others who will also forward it to many others. So our Sanatan Dharma and our great ancient divine language can be saved and propagated. Thank you very much, my dear friends.